वेलकम बैक टू कोड टू कॉर्टेक्स। आज हम करने वाले हैं क्लाउड मॉनिटरिंग क्विक स्टार्ट लैब। सो फर्स्ट हम इसको इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करेंगे। काइंड स्टैंड अग्री एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट हम यहाँ से ट्यूटोरियल को क्लोज करेंगे, वापस आएंगे ऑन टू द टास्क वन। टास्क वन से पहले हमें अपना रीजन एंड जोन सेट करना है, जिसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करके क्लाउड शेल को एक्टिवेट करेंगे। क्लिक कंटिन्यू, क्लिक ऑथराइज। नेक्स्ट यहाँ से हमें इस कमांड को कॉपी करना है, पेस्ट इट हियर एंड रन। यहाँ पे मेरे लैब के लिए जो जोन एंड रीजन दिया गया है वो सेट हो जाएगा। After this is completed, we will move on to task one, which is to create a compute engine instance. तो सबसे पहले हम क्लाउड शेल को मिनिमाइज करेंगे, then we will search for VM instances. Okay, compute engine, click on VM instances, click create instance. Then हमारे इंस्टेंस का नाम है lab1 VM। मेरी लैब के लिए रीजन है यूएस सेंट्रल 1 एंड जोन है यूएस सेंट्रल 1F। Please check for your lab, the region and zone could be different. CD is E2, machine is E2 medium. Okay. Next, the boot disk should be Debian GNU Linux 12 bookworm. Okay, it is that. And firewall in networking, click allow HTTP. That's it. Okay. Next, click create. After it is completed, हम यहाँ वापस आएंगे, click check my progress. Then we will move on to the task 2, which is to add Apache to HTTP server to your instance. So उसके लिए सबसे पहले उसमें SSH करेंगे, ये रहा, click on SSH, click authorize, and then हमें ये कमांड्स रन करने हैं इन ऑर्डर। हमें यहाँ दिया गया है हमें y एंटर करना है, सो विल एंटर कैपिटल Y। It is completed, we will restart it. Then next click check my progress. Then next हमें ये कमांड रन करना है SSH टर्मिनल में।
Next, is थ्री पे आ जाएंगे, विच इज टू क्रिएट एन अप टाइम चेक। सो SSH को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे अप टाइम चेक, क्लिक ऑन इट, क्लिक क्रिएट अप टाइम चेक, protocol select HTTP, okay. Source type should be URL, host name should be external IP of the VM. So we will go to the virtual machine instance that we just created. ये रहा external IP, से हम कॉपी करेंगे, then हम अपने checks पे जाएंगे, click create uptime check। हमने होस्ट नेम में external IP डाल दी है, फ्रीक्वेंसी में हमें 1 मिनट सेट करना है, then click continue। continue and continue। टाइटल के लिए हमें एंटर करना है लैम्प अप टाइम चेक। नेक्स्ट, क्लिक टेस्ट टू वेरीफाई, then click create। Now onto the task 4, which is to create an alerting policy. So for which we will again search alerting this time. Click create policy, click select a metric, remove this active by clicking on it, type network traffic, click on VM instance, and then click on interface, click on network traffic, click apply, click next, or threshold, set it to above threshold, okay, position, threshold value should be 500, and the advanced option retest window should be 1 minute. On this, it should be 1 minute. Click next, notification channel, click manage notification channel, we have to add an email here. This is for email. Click add now. Now you can enter this username as the email. For display name, you can just select anything.
Alert name should be inbound traffic alert. Check the notification channel we just created. And alerting policy name should be inbound traffic alert. Now click next, then click create policy. Check my progress. And congratulations, this lab is now complete. If this video was helpful, give it a like and subscribe our channel for more such videos. Now you can just simply end this lab.